Hope you all are fit, fine, healthy, and you all are revising your chapters properly. In previous class, we have learned about so many things, and I have told you to just keep check on the preservation. I hope you have seen the process how your mother used to preserve pickles and so many food items. In today's class, we are going to discuss about natural disaster and first aid, chapter number 8. आज बच्चों हम प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रकृति के द्वारा विनाश हो जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फर्स्ट एड यानी कि प्रथम सहायता के बारे में पढ़ेंगे. Many times we hear about events that cause damage to human life and property. बहुत बार बच्चों हम कुछ ऐसे हादसे के बारे में सुनते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का विनाश हो चुका रहता है. They may happen when we are not prepared for them. We have no control over them. बच्चों जो चीज प्रकृति करती है उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है. हम कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, बस हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं. Such situation which pose immediate threat to our life and property, उसे हम इमरजेंसी कहते हैं. इमरजेंसी इट कैन बी कॉज बाय नेचुरल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, साइक्लोन आ जाना, बाढ़ आ जाना. दे आर सम कॉमन नेचुरल डिजास्टर्स. नाउ लेट अस नो मोर अबाउट सम नेचुरल कैलामिटीज एंड देयर इफेक्ट. नंबर 1 इज योर अर्थक्वेक. बच्चों अर्थक्वेक, आई होप आप सबने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा या फील भी किया होगा. अर्थक्वेक यानी भूकंप आ जाना. जब पृथ्वी पे सडन शेक हमें महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी हिल रही है, तब बच्चों हमें ऐसा महसूस होता है कि पृथ्वी हिल रही है, तब उस वक्त को हम कहते हैं कि भूकंप आ गया. बट एग्जैक्टली होता क्या है? सो एन अर्थक्वेक इट इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट बिलो द अर्थ सरफेस. बच्चों अर्थ जो है वो हमारी टेक्टोनिक प्लेट से बनी है. सो जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं, then sudden shake get appear. So when large mass of hot liquid rocks they are pushed under the earth surface or an earthquake occurs. So कुछ earthquake बच्चों बहुत हल्के होते हैं जो हम महसूस नहीं होते, लेकिन कुछ earthquake बहुत ज्यादा माइल्ड नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो हम फील कर सकते हैं. Now it cause extensive damage to life and property. Here you can see in the picture, here is a damage which is caused by earthquake. What should वन डू इफ देयर इज एन अर्थक्वेक. एक इंसान को क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आ जाए? कैसा क्या करना चाहिए बच्चों? कुछ भी कभी भी जीवन में कोई भी ऐसे हादसे हो तो सबसे पहले व्हाट वी शुड डू, वी शुड कीप काम. हमें पहले शांत रहना है और शांति से दिमाग से काम लेना है. वॉक आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड मूव टू एन ओपन एरिया. अर्थक्वेक जैसे भी आपको लग रहा है कि अर्थक्वेक आ गया है, आपको सुनाई दे रहा है, सो आप बिल्डिंग से बाहर निकल जाइए, ओपन एरिया में चले जाइए. डू नॉट एंटर द बिल्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक स्टॉप्स. डू नॉट स्टैंड नियर विंडोज. खिड़की के पास मत खड़े रहिए. हैंगिंग पॉट्स, मिरर के पास मत खड़े रहिए. स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल्स. इलेक्ट्रिक पोल्स में बिजली के खंभे, उनसे दूर रहिए, पेड़ों से दूर रहिए. Then we have knowledge plus study of earthquake, उसे हम seismology बोलते हैं. One step ahead, the density of earthquake. जो earthquake की density है बच्चों, वो कौन मेजर करता है? वो मेजर की जाती है रिक्टर स्केल द्वारा. Then we have volcanic eruptions. So volcano क्या है? It is a vent in the earth crust through which जो molten rocks है, lava है, hot gases and ashes they are eject from the earth's interior. And ऐसे eruptions को हम volcanic eruptions बोलते हैं. और volcanic eruptions बच्चों बहुत ज्यादा damage cause करता है. Then we have cyclone. Cyclone क्या होता है बच्चों? तेज हवा का झोंका, जो साइकिल, जो गोल गोल करके विंड स्टॉर्म होता है और सारी चीजें आने वाले रास्ते में सबको अपने अंदर समेट लेता है, उसे हम साइक्लोन बोलते हैं. दिस साइक्लोन मतलब बच्चों बवंडर. सो साइक्लोन दे आर वेरी कॉमन इन कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन में ये बहुत ज्यादा कॉमन है. स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन, इट कॉज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अब हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू इन केस ऑफ साइक्लोन? सो हमें रेगुलरली बच्चों वेदर फोरकास्ट, जो भविष्यवाणी होती है कि कल मौसम कैसा रहेगा, वो हमें सुनते रहना चाहिए. अगर हम कोस्टल एरिया के पास रह रहे हो, हमें हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स रेडी रखना चाहिए. बी केयरफुल अबाउट द स्नेक एंड स्टिक बाइट्स एंड चेक द गैस लीकेज आफ्टर द साइक्लोन. देन वी हैव सुनामी. बच्चों जैसे पृथ्वी पर हमारी जो लैंड सरफेस है उस पे जब सडन शेक होता है तो अर्थक्वेक आता है, इसी तरह से जो ओशंस बॉडी, जो ओशन है, जो रिवर बॉडी है, जो वाटर बॉडीज है, उसके अंदर जब शेक होता है बच्चों, तब सुनामी आती है. सुनामी क्या है? ये बहुत बड़ी बड़ी लहरें हैं, वेव्स हैं. दे कॉज अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन अंडर द सी, and the waves travel with great speed and can be high as 50 feet. And the tsunami that occurred in Japan in March 12, it had made people homeless and caused great destruction.
क्या कर सकते हैं बच्चों इन केस ऑफ सुनामी? जस्ट बिफोर अ सुनामी स्ट्राइक द सी ऑफन रिसीड फ्रॉम द कोस्ट एंड इफ यू सी सच अ थिंग्स, हमें ऊंची ऊंचाई पे चला जाना चाहिए, ऊंची जगह पे चले जाना चाहिए. इफ यू लिव इन अ कोस्टल एरिया, अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, फील एन अर्थक्वेक, क्विकली रन टू अ हायर ग्राउंड लेवल. देन वी हैव लैंडस्लाइड. लैंडस्लाइड ज्यादातर बच्चों हिली एरियाज में अकर होते हैं when big rock stones and mudslides the mountain slopes towards valley. Now, landslides, they are more common in the rainy season and the Himalayas, they are very prone to landslides. ज्यादातर बच्चों हिमालयन रीजन, माउंटेनियस रीजन में लैंडस्लाइड होने के खतरे होते हैं. फ्लड बच्चों, फ्लड मतलब बाढ़ आना होता है. सो व्हेन द वाटर लेवल इन रिवर्स, जब नदियों लेक्स में पानी का लेवल बढ़ जाता है ड्यू टू हेवी रेनफॉल और फ्लो ऑन टू द नियर बाय लैंड, इट कॉजेज फ्लड. फ्लड बच्चों, इट कैन कॉजेज डैमेज. सबसे ज्यादा फ्लड बच्चों नुकसान पहुंचाते हैं क्रॉप्स को, एनिमल्स को एंड देन प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. When flooded water recedes, epidemics like malaria and कॉलरा ब्रेक आउट, और इनकी वजह से बहुत सारी बच्चों बीमारियां भी हो जाती है, महामारी जैसी बीमारियां हो जाती है. मलेरिया और कॉलरा आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट. ड्रॉट, सूखा पड़ जाना बच्चों. और ड्रॉट, जब किसी जगह पे लंबे समय तक पानी ना बरसा हो, वर्षा नहीं हुई हो, तो वो जगह कैसी पड़ जाती है? वो सूखी हो जाती है, बंजर हो जाती है. It causes severe damage to the soil, crops, animal and the people, and it usually results in the water shortage that seriously hampers human activities. Now, droughts, they are common in desert region of Rajasthan, and crops failure occur due to drought and result in famine. हमें क्या करना चाहिए बच्चों? टेक अ बाथ यूजिंग अ बकेट, डू नॉट वेस्ट वाटर इन एनी वे. इसीलिए बच्चों हमें कभी भी पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रीजन इंडिया में आज भी ऐसे हैं दैट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर वाटर. So do not leave the tap running unnecessarily and do not throw away water that has been used for watering plants or to clean the floor. Then we have wildfire. बच्चों जब जंगल में आग लग जाती है, fire in the forest and other areas they covered by vegetation is called wildfire. So uncontrolled fire can destroy forests, vegetations and animal species. What should be done in case of wildfire? So first of all, हमें क्या करना चाहिए? हमें फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर हम देख पा रहे हैं कि कहीं हमारे जंगल में आग लग गई है. So create a safety zone around the house that separates your home from plants and bushes that can burn easily. What we have to do? We have to clear dry bush and bush and grasses from your property because it can affect as fuel or fire. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं बच्चों नेशनल कमिटीज के? जब नेशनल कमिटीज आती है तो बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है लोगों के जीवन में और उनकी प्रॉपर्टीज पे. सम पीपल बिकम हैंडीकैप, बहुत लोगों को बच्चों अब हैंडीकैप हो जाते हैं, उनका हाथ पांव टूट जाता है, बहुत लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, ढह जाते हैं, डैम्स और रोड डैमेज हो जाती हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होमलेस हो जाते हैं. जैसे सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सर्विस ठप पड़ जाती है. हेल्प इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर्स, सो द गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती है, जो हमारी सरकार है इस टाइम पे बहुत ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करती है. बिसाइड गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है. एंड द यूनाइटेड नेशन डिजास्टर्स मैनेजमेंट टीम यूएनडीएमटी ये प्रोवाइड करते हैं बच्चों एड एंड सपोर्ट टू द अफेक्टेड पीपल. एंड सम अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड हेल्प आर UNICEF, United Nations Children's Emergency Fund, Indian Red Cross Society, First Hand Foundation. Now, armed force help in supplying essential items. जो armed force है बच्चों वो supply इस time पे करते हैं essential items, food, water, blankets, clothes, etc. to the people in disaster sites. Police help करती है to maintain law and order, and the policemen, firemen, and soldiers and volunteers they help in rescue work. आपका role क्या है? Join hand with NGO and do your bit. Collect essential items like food, water, clothes, etc. and encourage the people in your neighborhood to contribute in cash or kind. Then we have emergency kit. So every family should have an emergency kit in their home. बच्चों सभी की फैमिली में I hope आप सबकी फैमिली में एक emergency kit, एक first aid box होगा और आपके क्लास में भी एक first aid box होना चाहिए. If there an earthquake or tsunami for instance, so there could be a power cut of the water could get polluted, you might get stuck in your home for several days because of storm and flood. So having an emergency kit ready could help if anything like this happens. The emergency kit should contains what? Food and drinks, clothes and other things like torch and medicines. Now what is first aid? First aid क्या होता है? प्रथम सहायता, immediate help given to the wounded or injured person before the proper medical aid arrives. So timely first aid can save one's life. Tips while giving first aid: stay calm, शांत रहिए, quickly act कीजिए, do what you can or call an elder, do not allow people to crowd around the victim.
In case of fire, हमें क्या करना चाहिए? Raise an alarm and inform the fire brigade by calling 101 and rush the nearest available exits. If caught in fire, don't run or panic. Stop, drop, and roll on the fire. Now turn off all the electrical appliance अगर possible हो. Fire extinguisher का इस्तेमाल कीजिए. If the fire is caused by kerosene or petrol, कभी भी उस पे पानी मत डालिए because इससे पानी और भी ज्यादा भड़क जाता है, आग और भी ज्यादा बढ़ सकती है. हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? We should throw sand and mud on the fire instead. One step ahead. In case of fire, do not use elevators or escalators. Use stairs instead. Now, common aids. अब हम कुछ बच्चों कुछ ऐसे एड्स पढ़ेंगे जो कॉमनली हमारे साथ कभी कभी छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं. उनके लिए हम कौन सा फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं? नंबर वन इज योर बर्न्स. जब कहीं किसी को गलती से कोई जल जाए. सो इन द केस ऑफ माइनर बर्न, apply cold water or ice on the burn part. Apply an antiseptic cream to get relief from the pain. In case of major burn, we should take the victim to a doctor immediately. नोज ब्लीडिंग में क्या कर सकते हैं बच्चों? किसी के नाक से खून आने लगे तो इन द केस ऑफ नोज ब्लीडिंग आपको पेशेंट्स को बैठाना है सीधे और उसके सर को पीछे करके उसके नाक पे आपको एक कपड़ा रखना है. पिंच हिज nostril and ask him to breathe through his mouth for about 10 minutes. और आप उस पे आइस पैक अप्लाई कर सकते हो. देन वी हैव स्प्रेन. किसी को मोच आ जाए. स्प्रेन क्या होता है? जब जॉइंट ट्विस्ट हो जाती है. इन केस ऑफ स्प्रेन, put an elastic bandage or crepe bandage around the sprained area to immobilize it and apply a plain pain relieving ointment like iodex on the sprained area. फ्रैक्चर मतलब बच्चों जब हमारी हड्डी टूट जाती है, क्रैक हो जाती है. इस केस में वी शुड नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट and tie a splint to the broken bone. A sling can be used to support a fractured arm and take the victim to a doctor. फेंटिंग बच्चों अगर किसी को चक्कर आ रहा है, कोई बेहोश हो जाता है, so make the victim lie down with his head a little lower than his body. This will make extra blood reach her brain. Do not crowd around her. Let him breathe fresh air. Then we have wound and cut. So बच्चों wound and cut के केस में one need to be very careful and germ center our body through these uncovered cuts and wounds. So हमें क्या करना चाहिए? We should follow the following 8 tips in case of cuts and wound. And what are they? हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? We should wash the wound with water. उस पे antiseptic lotion लगाना चाहिए with cotton gently on the affected part. Cover the wound with a clean bandage. If the wound or cut is deep, take the victim to the doctor. And if the cut is due to any metal object, one must use the injection of anti-tetanus. Now, here we have completed our chapter. Now let us revise some summarizing points from the chapter. Situation that pose immediate threat to our life and property, they are called emergencies. Emergency caused by natural factor, उसे हम natural calamities बोलते हैं. Earthquake cause great damage to life and property. A cyclone is very strong, rotating windstorm accompanied by heavy lashing rain. Landslides occur mostly in hilly regions. Tsunamis, they are huge seas waves caused by earthquake or a volcanic eruption under the sea. A drought is a long dry spell with the little or no rainfall. Flood, they are caused when water level in lakes and rivers rise due to heavy rainfall. Wildfires, they are destructive fires in forests and every family should have an emergency kit in its home. During emergencies, immediate treatment is given to the patients before the arrival of the doctor and such emergency treatment is called first aid. Okay, dear learners, so we have completed this very interesting chapter. In this chapter, we have learned about some natural calamities and what precaution we should do. We have learned about first aid also, and we have also learned about some remedies and some action that we should perform when we see any patients. Okay, dear learners, so we will be seeing you in another class. Till then, revise this chapter properly and take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.